Assalamu alaikum everyone, this is Asim and I'm back on Edunist with another beautiful lesson for you. In this lesson, I have something great to share with you. और ये lesson basically उन लोगों के लिए है जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं. And I think उन लोगों में हर कोई शामिल है. Okay? आप कम टाइम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाकर आपके लिए एक कंसाइज लेक्चर तैयार किया है. ओके तो इस लेक्चर में आपको बेसिकली सिखाए जाएंगे ऐसे वर्ड्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपकी फ्लुएंसी को डेवलप करने में. ओके सो बेसिकली ये जो वर्ड्स मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, ये वर्ड्स ये भी इम्प्रेशन रखते हैं कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं. ओके अगर आप इन वर्ड्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं तो आपके जो लिसनर्स हैं उन पर ये इंप्रेशन जाएगा कि आपकी बेसिकली आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं. राइट, आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये इंप्रेशन जाएगा जब आप ये वर्ड्स यूज करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में. ओके सो इसके अलावा आपकी जो फ्लुएंसी है वो ऑलमोस्ट 10 to 15% इम्प्रूव हो जाएगी. राइट सो आपने इनको प्रैक्टिस जरूर करना है. जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो कंप्लीटली देखें और जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो उस दौरान प्रैक्टिस जरूर कीजिए. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, I just want you to subscribe my YouTube channel and also click the bell button to turn the notifications on. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो go subscribe my channel right now, okay? Because I'm bringing you something very useful. Right. So here we have the first lesson. पहला word है हमारा not. Okay? Not हमारे पास कुछ इस तरह के words हैं जिनके साथ हम not का यूज करते हैं. Okay? तो उन words को जरा देख लेते हैं कि किस तरह से उनको shortly कहा जा सकता है. ठीक है, यानी आप उनको fast कैसे कह सकते हैं. is not, इसको आप क्या कह सकते हैं? आप इसको कहिए isn't. isn't कहिए इसको, is not कहना छोड़ दीजिए. एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप लिख रहे हो आपकी फॉर्मल राइटिंग में, आप इसको isn't नहीं लिखेंगे, आप इसको is not ही लिखेंगे. राइट सो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला स्पोकन इंग्लिश के लिए होल्ड करता है. ओके आप इसको रिटन के लिए नहीं लेकर जाएंगे, वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे. सो isn't. ओके aren't, are not को आप कहिए aren't. प्रैक्टिस कीजिए साथ. aren't. That's great. Okay, so here we have another one. wasn't. Okay, now we have weren't. जैसे वो weren't गिरफ्तारी. Okay, वैसे ही weren't. Okay, great. So now we have hasn't. अब देखिए आपको कहना है has not और hasn't. Like आधा फर्क है, आप कह लीजिए. Okay, so hasn't. Great. Okay, keep practicing. Right, so here we have haven't. Repeat after me, okay? So hadn't. आपका अगर इस तरह का जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं अगर ये नहीं बनता तो आप इसको hadn't कह सकते हैं सीधी तरह से. hadn't, right? अगर आप ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं hadn't. That's great then. Okay, want. will not को आप want कह सकते हैं. Okay, want. Great. wouldn't. Good. Don't.
डू नॉट देखिए ज़्यादा टाइम लेता है ये, और डोंट, आई डोंट वांट टू गो देयर, डोंट, डजंट, 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 डिडंट, 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 cannot। अब आप cannot कहेंगे या can't। बाय द वे ब्रिटिश एक्सेंट में इसको आप can't कहेंगे और अमेरिकन एक्सेंट में आप इसको can't कहेंगे, can't, ओके, can't, और ब्रिटिश में can't, can't, ओके, can't, once again please, can't, great, couldn't, 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 shouldn't, 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 mightn't, 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 mustn't। अब यहाँ पर must का जो टी है आप उसको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप mustn't कहिए, राइट। ये टी को आप यहाँ से यहाँ पे छोड़ दीजिए, राइट। आपने इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, सो mustn't, mustn't, great, okay, so now we have another word that is have। इसको आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है बाकी वर्ड्स के साथ, जब आप इसको कॉन्ट्रैक्शंस के साथ रखेंगे तो देखते हैं कि कैसे हम इसको ठीक तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, सो वुड हैव, वैसे आप इसको कहेंगे वुड हैव, लेकिन आप इसको फास्ट कहना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, सो फॉर दैट वुड हैव, वुड हैव, ओके, वुड हैव, would have, okay, now we have another word, should have, should have, should have नहीं कहेंगे आप, okay, should have नहीं कहना है, जिस तरह से यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा क्विकली कहें, थोड़ा सा फास्ट कहें इसको, should have, should have, should have, great, okay, could have, could have, could have, could have, great, must have, now must have, okay, must have, must have, must have, okay, now we have another word that is is के साथ किस तरह के contractions हम बना सकते हैं वो देखते हैं। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, राइट, दैट्स द की। आपको ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। सो इज, हिज, शीज, शीज। एक पॉइंट याद रखिए यहाँ पर कि आप जब इसको प्रोनाउंस करें तो इसको सिंपली शीज कह दें। बाज़ औक़ात इसको शी हैज़ भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, शी हैज़ अ बिग हाउस फॉर एग्जाम्पल, राइट, शी हैज़ डन इट, शी हैज़ डन इट, तो शी हैज़ डन। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हैज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सेंस में, कौन सी सेंस में बात कर रहे हैं। सो ये इज़ का मतलब हैज़ भी होता है, और यहाँ पर यानी अगर आपको इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यूज करना है तो हैज़ भी हो सकता है इसका मतलब, और इज भी हो सकता है। सो शी इज, राइट। नाउ वी हैव दैट इज, दैट्स, दैट्स, सिंपली दैट्स, दैट्स, there's, there's, there is a black fox, okay, there is a black fox, there is a black fox, for example, okay. So there's, okay, where's,
what's up, like what's up, what's. whose, अब ये whose दो तरह के होते हैं. एक ये वाला whose है, who is. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से अगर कोई डोर नॉक करे तो हम क्या कहते हैं, लाइक हु इज देयर. ओके, ये वो वाला है, हु इज देयर. एक है हुज पेन इज दिस, हुज यानी WHOSE, हुज, किसका. सो ये इनका डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, हुज. ओके, हुज. Alright, so here we have are. are को किस तरह से हम contractions के साथ यूज कर सकते हैं, combinations के साथ यूज कर सकते हैं. So here we have a few examples. कुछ हमारे पास ऐसे आप कह सकते हैं contractions हैं. चलिए देखते हैं ये. They are, they are, they are. थोड़ा सा फास्टली अगर कहेंगे तो किस तरह से, they are, they are. What are, what are, what are, what are, what are, what are भी कह सकते हैं, water. Okay, water. जैसे हम water कहते हैं ना, पानी, water, उसी तरह से बिल्कुल ये. वैसे तो लेकिन थोड़ा सा जो what है इसको आपने तेजी से बोलना है, what, what, water. Okay, so here you have you are, you are. मैंने देखा है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग नॉर्मली. यू आर वेलकम. ओके, यू आर यानी तुम्हारा शुक्रिया, वो इस तरह से कहते हैं, यानी यू YOUR, यूर, आपका. लेकिन बेसिकली वो ये वाला यूर है. ओके, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. ओके, सो ये जिन लोगों की मिस्टेक्स हैं वो दूर कर लीजिए. ओके, यू आर. राइट, हु आर, हु आर, हु आर यू, हु आर यू. एक ये तरीका है कहने का, और एक है हु आर यू, हु आर, हु आर, हु आर, हु आर यू. ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए तो फिर से, who are. Okay, now here we have another aspect that is basically will. He will. Okay, he will, he'll. ये जो will है इसको आपने किस तरह से यूज करना है, आप इसको कहेंगे like he'll. हील नहीं कह देना जिस तरह से वो एड़ी होती है, इसको हम हील कहते हैं. नो, he'll, he'll be with you, he'll be with you, for example. Okay, so he'll, I'll, 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 I'll नहीं कह देंगे, simply I'll. Okay, I'll. Great. Okay, she'll, she'll, she'll. Keep practicing. She'll, they'll, 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 we'll, we'll. Good, will, yeah, exactly, will. Who'll, who'll, who'll. Great. Okay, again, you'll, 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 you'll. Okay, so here we have today's last lesson, that is had or would. तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या confusions होती हैं. So
he would और he had। ये आपको टेंसेस के लिहाज से डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ओके, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिहाज से। कॉन्ट्रैक्शंस में जब हियर आपके पास है तो आप समझ लीजिए कि वो हैड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप टेंसेस के लिहाज से कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, he had better go, he had better leave now। ओके, नाउ आप यहाँ पर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वुड और हैड, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, he had a car for example, he had a car। अब वाज़ेह है कि यहाँ पर जो आप कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं वो बेसिकली हैड है, राइट? आपका कहने का मतलब है हैड। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से वाला यानी जब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें तो आपका वो उस वक्त मतलब क्या है, वुड यूज़ कर रहे हैं या हैड यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू फिगर इट आउट। ऑलराइट, सो he'd, okay, she'd, I'd, great, I'd, you'd, nice. Okay, well, we are done with our today's lesson. If you really liked my lesson, today's lecture, that I worked very hard on it for you people, I want you to go click the like button now, okay? And comment below if you have any suggestions or you want to say something, okay? And also subscribe my channel and click the bell button too. Take care. Thank you for watching my video.